three videos of elasticity we have already understood, or some of the topics of the elasticity we have already covered. Today we will see electrical symbols for some commonly used components. Students, there are some electrical components, or you can say simply there are some components which we use in the electricity. Suppose in homes for the bulb there is a symbol. कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो भी आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो आप लगा रहे हो उनके लिए उन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर सम सिंबल्स एंड वी हैव टू लर्न दो सिंबल्स टुडे. सो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, वो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या है फॉर कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स. जो हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं उन कंपोनेंट्स के लिए जो सिंबल्स हैं वो क्या है. सपोज आपके पास एक सेल है, सपोज आपके पास घर में जो टॉर्च होती है आपको पता है उसमें आप एक सेल डालते हो और स्विच जब ऑन करते हो तो वो टॉर्च आपको क्या देती है, फ्लैश लाइट देती है. तो जो वो सेल उसमें है उस सेल के लिए सिंबल कुछ ऐसा है. दो पैरेलल लाइंस है, द लेंथ ऑफ वन लाइन इज मोर देन द लेंथ ऑफ द अदर लाइन. ऐसे अगर दो अनइक्वल लेंथ की लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर, सच अ सिंबल इज नोन एज सेल. ये मेनली सोर्स है डायरेक्ट करंट के लिए. सेकेंड इज बैटरी. आपको पता है जो बैटरी हम यूज करते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अगर हम इन सेल्स को अगर हम क्या कर दें, सीरीज में कंबाइन कर दें. सीरीज में कंबाइन करने का मतलब है नेगेटिव, this is positive terminal of the cell, this is negative terminal of the cell. Negative terminal of the cell is connected to the next cell's positive terminal. Next cell के positive terminal को पहली सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे अगर सेल्स को आप कनेक्ट करते जाओगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी. इसको हम बैटरी कहेंगे. ऐसा एक सिंबल है आपके पास, दिस सिंबल इज used for the lamp or you can say bulb. ऐसा एक सिंबल अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर आपको दिखे तो you must understand that symbol is for lamp or bulb. Next is connecting wire. You know students, suppose you have two bulbs in your hand and you want to connect these two bulbs. So you need a wire. That wire is known as connecting wire, which is used to connect electrical components in a circuit. So we use the wires to connect the electrical components and these wires are known as connecting wires. तो उसको हम कुछ ऐसे straight line symbol से show करते हैं. Next is students very important electrical instrument that is known as resistance. ऐसे अगर आपको ऐसे हिल टाइप में अगर कोई सिंबल मिलता है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. स्टूडेंट्स, एक तो ये मैंने सिंबल बनाया है, दिस इज अनदर सिंबल इन विच थ्रू द रेजिस्टेंस देयर इज एन एरोड लाइन. इसका मतलब क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है एंड दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. मतलब इसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. सो दिस is known as variable resistance, its value is fixed resistance. Next is open key. ऐसे अगर आपके पास कोई सिंबल है that is known as open key. और जब तक ये ऐसे रहेगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कहीं आपको ऐसा सिंबल दिख जाए और जब तक ये ऐसा होगा तब तक आपका जो सर्किट है वो ओपन सर्किट होता है, क्लोज नहीं होता है. नेक्स्ट इज क्लोज्ड की. अगर आप ऐसे दो बना देते हो और उसके बीच में अगर आपको एक डॉट मिलता है दैट मीन्स दैट सिंबल इज नोन एज और दैट सिंबल रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड की. नेक्स्ट इज स्विच. कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, ड्रॉ करके दिखाऊंगी, उसमें इफ यू फाइंड सच अ सिंबल जिसमें आपके पास आप देख रहे हो यहाँ पे भी दोनों के बीच में गैप है दैट मीन्स ये ओपन है. बट व्हाट डज दिस सिंबल shows? This symbol shows that this is for a switch, but switch is open. If we
press this switch, so this would become a closed switch. Next is emitter. अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ऐसा सिंबल है, A लिखा हुआ है लेटर, and one terminal is positive and one is negative, so such a symbol is for emitter. Next, emitter आपको पता है, I have already told you, emitter we always connect in series. हमेशा सीरीज में हम क्या करेंगे, एमीटर को यूज करेंगे, एंड एमीटर इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग इन अ सर्किट. किसी भी सर्किट के अक्रॉस जितना करंट फ्लो कर रहा है, सो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इज, वोल्ट से आपको पता चल रहा है, दिस इज फॉर वोल्टेज. आपको अगेन एक सर्कल मिलेगा, सर्कल के अंदर V लिखा होगा, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल और सेकंड इज नेगेटिव टर्मिनल, और इसको आप हायर पोटेंशियल भी बोल सकते हो. जहां पे पॉजिटिव है दैट इज ऑल्सो नोन एज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज नोन एज लोअर पोटेंशियल. सो ऐसा एक सिंबल इज नोन एज वोल्ट मीटर, एंड वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ potential difference between the 2 points, and this is always connected in parallel. Next is galvanometer. Galvanometer का first letter is G, voltmeter का first letter is V, and ammeter का first letter is A. So whenever inside the circle you see the letter G and one is positive terminal and second is negative terminal, such a symbol is known as galvanometer. So students, these are the electrical symbols we use for electrical components. Now we would understand how does current flows in metals or metallic wires. कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है. तो हमने बात की थी, we have understood about the insulators, conductors के बारे में we have already understood. So question is, how does electric current flows in metals? Metals के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, this we have to understand. Suppose we have a metallic wire. This is a metallic wire, and you know inside the metallic wire there are electrons as well as protons. इलेक्ट्रिक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्टूडेंट्स चार्ज इज नेगेटिव एंड प्रोटॉन्स कैरीज द चार्ज पॉजिटिव. बट यू नो प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव नहीं करते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. सो आई एम ड्रॉइंग सम इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस मेटालिक वायर. These are the electrons on which the charge is negative. This is a metallic wire, and the direction of these electrons is random direction. Electrons are moving in random direction. You know students, inside the metal is made up of atoms, and inside the atom, this is the structure of atom. This is nucleus. Nucleus के अंदर आपके पास protons है और neutrons है, and electron revolve around the nucleus. Electrons क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, continuously motion में होते हैं around the nucleus. But these electrons, जो outermost shell के अंदर जो electrons होते हैं, those are known as free electrons. I have already told you why these electrons are known as free electrons, because they are free to move inside the metal surface, but they cannot leave the metal surface. वो सिर्फ metal surface के अंदर घूम सकते हैं freely, but metal surface को leave नहीं कर सकते हैं. So these electrons are moving, that means they are in motion, that means they are moving in some directions. This electron has negative charge and moving in this direction. This is moving in this direction. This is moving in this direction. That means there is no particular direction of motion or movement of electrons. अब आप ये देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि electrons, if I ask you in which direction electrons are moving, then you will say कि electrons are not moving in any particular direction. Electrons are in random or moving in electrons are
मतलब they are moving in all the directions. There is no fixed direction. They are neither all the electrons are moving in this direction, not in this direction. That means some electrons are moving in this direction, some are in upward direction, downward direction, forward direction. That means they are moving in random direction. So जब तक electrons are moving in random direction, till the time there would be no flow of current. जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, दैट मींस नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर जब तक इनका मूवमेंट नहीं होगा तब तक देयर वुड बी नो फ्लो ऑफ करंट. सो हाउ डज करंट फ्लोस? अब करंट को फ्लो कैसे कराएं? सो इन ऑर्डर टू मेक द करंट फ्लो वी हैव टू कनेक्ट द two ends. This is one end of the wire, this is another end of the wire. I have to connect the two ends of the wire through a battery or cell. अभी हमने एक सिंबल बनाया था बैटरी के लिए like this. This is higher potential or you can say positive terminal of the battery or cell, or this is negative terminal of the cell. So suppose this is a battery. अब बैटरी का एक टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड वन टर्मिनल इज नेगेटिव एंड दिस इज अ बैटरी. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कनेक्टेड द टू एंड्स ऑफ द वायर. दिस इज वन एंड ऑफ द वायर, दिस इज सेकेंड एंड ऑफ द वायर. One end of the wire is connected to the positive terminal of the battery and second end of the terminal is connected to the negative terminal of the battery. You know battery has two ends, two terminals. One is positive, second is negative. So electrons के ऊपर खुद कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. So मैंने आपको बताया था नेगेटिव नेगेटिव, that means same charges, like charges would repel each other. So जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये इस डायरेक्शन में तो वो मूव करेंगे नहीं, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ तो आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है. सो इलेक्ट्रॉन्स would flow towards the positive terminal, or you can say electrons will flow from lower potential to the higher potential. मतलब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. सो डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जब अगर आप यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, और यू कैन से व्हेन अ पोटेंशियल इज अप्लाइड, potential is applied between the two ends of the wire, then electrons would flow from negative potential or you can say lower potential to the higher potential. So अब अगर हम इन electrons का movement अगर देखें तो they would move in towards the positive terminal. Like this. This is the direction of flow of electrons. All the electrons would flow towards the higher potential. From the lower potential to the higher potential, electrons will move. So what is the direction of flow of electron? This is the direction of flow of electron. Now definitely if the electrons are moving in a single direction, in a particular direction, so there would be flow of current through this wire. Current भी अब क्या करेगा? Flow करेगा, because electrons are moving in a particular direction, in a fixed direction. So what is the direction of current? Current would flow from positive terminal to the negative terminal. This is the direction of flow of current. Positive terminal to the negative terminal, like this. This is the direction of flow of current. What is the direction of flow of electron? From negative to the positive, like this. So if I ask you what is the direction of flow of electrons, then you would say कि direction of flow of electrons is from lower potential to the higher potential, or you can say from the negative terminal to the positive terminal. What is the direction of flow of current? Positive terminal to the negative terminal.
जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी और फ्लो ऑफ करंट होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी. नेक्स्ट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द electrical circuits and electrical circuit diagram. Now we have to understand about the electrical circuits क्या होगी, या electrical circuit को हम कैसे define कर सकते हैं, and circuit diagram. Circuit diagrams क्या होते हैं. अब स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स स्टडी कर लिए हैं, रेजिस्टेंस, सेल, आपका बैटरी, देन की, ये सब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं. सो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, इफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दे, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी in such a way that a closed path is formed for the flow of current. This is known as electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम अरेंज कर दें, हम जोड़ दें एक बैटरी से, तो क्या बन जाता है, एक क्लोज्ड लूप बन जाता है, एक क्लोज्ड पाथ बन जाता है, जहां पे करंट एक एंड से शुरू करके फ्लो करना शुरू करके दूसरे एंड तक जाता है. सच अ पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट. उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे. एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ in which electrical components are connected to a battery, such a path which is a closed path and current flows through that is known as electrical circuit. कैसे बना सकते हैं electrical circuit, देखो. Suppose you have 1.5 volt lamp. This is a symbol of lamp. I'm giving you some electrical components. 1.5 volt का एक आपके पास बल्ब है, आपके पास एक बैटरी है, आपके पास एक एमीटर है, and you have one resistance, fixed resistance है आपके पास एक, and आपके पास वोल्ट मीटर है, एंड आपके पास एक स्विच है. इन सबको आपको, दीज आर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इन सबको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, और उसको क्या, उससे क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको बनाना है. सो लेट अस डू. सपोज दिस इज, नहीं तो आप ये हटा दीजिए, यू हैव अ रेजिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस है, यू नो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये हमने एमीटर यहां पे कनेक्ट कर दिया है, करेक्ट. नाउ एमीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया. नाउ वी हैव वन स्विच. अब ये हमारे पास एक स्विच है. आई होप आई एम क्लियर. एक स्विच है एंड आपके पास एक बैटरी है, बैटरी नहीं, सेल कर देते हैं अभी. सपोज यू हैव वन सेल. सो सेल आपको पता है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एंड ये बन गया आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट. ये सारे कंपोनेंट्स आपने लगा दिए हैं. वी आर लेफ्ट विद वन मोर कंपोनेंट दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर, एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो वोल्ट मीटर हम यहाँ पे लगाएंगे. दिस इज वोल्ट मीटर. अब टेल मी, करंट विल फ्लो और नॉट. तो करंट विल नॉट फ्लो. व्हाई? बिकॉज दिस स्विच इज ओपन स्विच. जब तक टिल द टाइम यू विल नॉट
press it or close it. This is not a closed circuit, this is an open circuit, and current will not flow through an open circuit. Current will always and always flow through a closed path. So we have to make it closed. So कैसे बनाएंगे? This is a closed switch now. Now this is positive terminal of the ammeter, this is negative terminal of the ammeter, this is positive and this is negative. This is the electrical circuit in which you have connected the electrical components through a battery, and a closed continuous path is formed through which electric current flows. And the diagram of the components to make an electrical circuit is known as circuit diagram. जो diagram आपने बनाया है on the paper, in which you have used the symbols of electric components, such a diagram is known as circuit diagram. So students, this is the basics of electrical components, electric circuit and circuit diagram. In the next video, based on this, we would understand the concept. Thank you.